Hi, I'm Rodi Srivastava, I'm Anuradha Nagraj. and this is The Migration Story. দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে, ক্ষুদ্র এই দেশের রক্তের অক্ষরে। It was a moment when poetry became a site of political imagination, turning its gaze on the people who toiled on the illusion of the motherland to build the stairs of their oppressors. लोखंडाला वितळवणारा आणि त्याला आकार देणाराही तूच. जिथे जिथे यंत्रांचा वावर झाला त्या शहरांना क्रांतिकारक वारसा देणाराही तूच. Where some labored to live, while others lived off that labor. আপনি বলুন মার্কস, মেয়েরা কি বিপ্লবের সেবাদাসী হবে? Because domestic toil earns no wage, must women only sit at home and cook for the revolutionary? ಕೈಯಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. Where policy abstracts and data reduce, poetry restores the lived reality of those who bear the brunt of these hierarchies. Hi, I am Sneha Sengupta, and on this International Labour Day, The Migration Story brings to you The Fire in the Belly, Poetry as Political Memory. हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े। ओ हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ। Hum Ladenge Sathi. This poem comes to us from the early 1970s, a time when a revolutionary voice refused to remain confined to a verse. Avtar Singh Sandhu, whom we commonly know as Pash, wasn't just writing poetry. He was writing from within struggle, about the rights of the working class, about resistance, and about a refusal to accept injustice. His words emerged during a time of significant agrarian unrest in Punjab. And you can hear it not just in what he says, but in the urgency of how it is said. The poem has been turned into a song by Ravinder Randhawa, and it comes from Aaj Ke Naam, a music album by Majma. But such poetry did not emerge in isolation. The formation of the Progressive Writers movement in 1936 marked a shift from romantic introspection to a literature rooted in social realism and anti-colonial struggle. It was a moment when poetry became a site of political imagination, turning its gaze on the people who toiled on the illusion of the motherland to build the stairs of their oppressors. Yet, that moment did not travel intact into independence. The post-colonial era didn't leave caste behind. It reshaped it, and as new classes emerged in the making of a new India, caste hierarchies deepened alongside them. This was also a time of massive migration, from villages into cities and into pockets of socio-economic exclusion within spaces dominated by upper-class elites. This is where Shukanta Bhattacharya, writing in the mid-1940s, enters with a wandering voice. ঠিকানা আমার চেয়েছো বন্ধু, ঠিকানার সন্ধান আজও পাওনি, দুঃখ যে দিলে করব না অভিমান। ঠিকানা না হয় না নিলে বন্ধু, পথে পথে বাস করি, কখনো গাছের তলাতে, কখনো পর্ণকুটির গড়ি। আমি যাযাবর কুড়াই পথের নুড়ি, হাজার জনতা যেখানে সেখানে আমি প্রতিদিন ঘুরি। বন্ধু ঘরের খুঁজে পাই না কো পথ, তাই তো পথের নুড়িতে গড়ব মজবুত ইমারত। বন্ধু আজকে আঘাত দিও না তোমাদের দেওয়া ক্ষতে,
আমার ঠিকানা খোঁজ করো শুধু সূর্যোদয়ের পথে। ইন্দোনেশিয়া, যুগোস্লাভিয়া, রুশ ও চীনের কাছে আমার ঠিকানা বহুকাল ধরে যেন গচ্ছিত আছে। আমাকে কি তুমি খুঁজেছ কখনো সমস্ত দেশ জুড়ে, তবু পাওনি? তাহলে ফিরেছ ভুল পথে ঘুরে ঘুরে। আমার হদিশ জীবনের পথে মনন্তর থেকে ঘুরে গিয়েছে যে কিছু দূর গিয়ে মুক্তির পথে বেঁকে। বন্ধু, কুয়াশা সাবধান এ সূর্যোদয়ের ভোরে, পথ হারিও না আলোর আশায় তুমি একা ভুল করে। বন্ধু, আজকে জানি অস্থির রক্ত নদীর জল, নীরে পাখি আর সমুদ্র চঞ্চল। বন্ধু, সময় হয়েছে, এখনো ঠিকানা অবজ্ঞাত। বন্ধু, তোমার ভুল হয় কেন এত? আর কতদিন দু চক্ষু কচলাবে? জালিয়ানওয়ালার যে পথে শুরু, সে পথে আমাকে পাবে। জালালাবাদের পথ ধরে ভাই ধর্মতলার পরে দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে, ক্ষুদ্র এই দেশের রক্তের অক্ষরে। বন্ধু, আজকে বিদায়। দেখেছ উঠল যে হাওয়া ঝড়ো, ঠিকানা রইল, এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা করো। Shukanto Bhattacharya's wandering voice in Thikana carries the dislocation of the people who built the country, yet could not claim a place within it. As the new preamble embraced industrialization, cities like Mumbai, Jamshedpur, and Ahmedabad became sites of production and aspiration. However, post-independence industrial workers in India faced poor conditions, including extremely low wages, long working hours, a lack of safety, and limited medical care. Key sectors like textiles, construction, and mining saw high rates of injuries, fatalities, and child labor in the early decades, requiring gradual union intervention. And then in the 1970s, another radical voice emerged. Namdev Dhasal, a Dalit activist from Maharashtra. His poems brought out a sense of reality, rawness, and liberation, which is why he is often referred to as a Vidrohi Kavi. From his 1972 poetry collection Golpitha, we present Kamgar Bandhu. हे जग तुझ्या श्रमावर चालले आहे. किती रे करतोस रक्ताचं पाणी. मी तुलाच सर्जनाचा निर्माता मानतो. बाकीच्यांचा हिशोब कशाला? 1/3 जगावर रक्ताने रंगलेला ध्वज फडकवणारा तूच, ह्या देशाच्या रक्तधमनीतून वाहणाराही तूच, लोखंडाला वितळवणारा आणि त्याला आकार देणाराही तूच, जिथं जिथं यंत्रांचा वावर झाला त्या शहरांना क्रांतिकारक वारसा देणाराही तूच. तुझे घामेजलेले स्नायूबद्ध चित्र मी माझ्या कवितेत प्रतिमेसाठी वापरतो. माझ्या कवितेला सप्राण करतो, तिचा आणि तुझा सन्मान करतो. मला माहितीये की तूच लढू शकतोस गुलामगिरी विरुद्ध. मला माहितीये की तूच पर्दाफाश करू शकतोस सरंजामशाहीचा. मला माहितीये की तूच मुठमाती देऊ शकतोस भांडवलशाहीला. मला माहितीये की तूच वितरणासाठी वापरू शकतोस शासन यंत्रणा. तुझा मी स्तुती पाठक भाट, त्यांच्या लेखी मी देशद्रोही आणि गुन्हेगार. ते वल्गना करतायत माझ्या घरावरून नांगर फिरवण्याची. कामगार बंधू, ज्या हिटलरचं थडगं तू बांधलंस, त्या थडग्याचाच ह्या कुत्र्यांना विसर पडलाय. त्या थडग्याचाच ह्या कुत्र्यांना विसर पडलाय. The questions raised by Namdev Dhasal in his poem did not seek answers, but exposed a structure in which labor creates value that was systematically denied. Even as worker unions revolutionized the labor rights landscape, an equal tripartite force sought to neutralize radical change by placing the state in charge. Often, this diluted workers' demands under the umbrella of industrial peace. Mohanachand Patil cuts through this institutional language to reveal what persists beneath it. ದಣಿಯದೆ ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಜಾತಿ ಭೇದ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಕರಾಮತ್ತು, ಅವುಗಳಿಗೆ ದುಡಿಯುವುದೊಂದೇ ಗೊತ್ತು. ಅವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇವೇನು? ಫಾರೋನ್ ಮಮ್ಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಿರಾಮಿಡ್ಗಳು, ಚಳಿಗಾಳಿಗೆ ಎದೆಗೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದವೇನೋ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲುದ್ದ ಚೀನಾದ ಗೋಡೆಗಳು, ಬೆಳದಿಂಗಳೊಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವೇನೋ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಗುಡಿಗೋಪುರ ಗುಂಬಜುಗಳು,
ಮಣ್ಣಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದ ಆಕಾರಗಳಿಗೆ, ನಗರಗಳಿಗೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಸೆಯುವ ಸೇತುವೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ಮಣ್ಣು ಹದೆಗೊಳಿಸುವ ಕೈಗಳು. ಯುಕ್ತಿಜನ್ಯ ವಿದ್ಯಾನ್ಮಾನ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ಚುರುಕು ಲವಲವಿಕೆಯ ಕೈಗಳು. ಕೈಯಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸೆವ ಹಾವು ಉಡವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದುಡಿಯುವ ತುಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಡಿದು ಬಂದ ಈ ಕೈಗಳು ದಣಿಯುವ ಮುನ್ನ, ಬೆವರಾರುವ ಮುನ್ನ, ತಕ್ಕ ಶ್ರಮಫಲ ಕೊಡದಿರೆ ದಣಿಗಳು ಕೇಳದೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವವೇ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಅನ್ನ. Dudiyuva Kaigalu, or Working Hands, published in 2009, tells us how working hands make an economy and how they continue to struggle for their own existence. As the newly independent Indian economy moved through the paradox of a declining female workforce participation, women were pushed back into domestic confines. Mechanization of agriculture and rising household incomes rendered them an emergency supply of labor, no longer required in moments of stability but always available in crisis. The new India embraced an urban Western model of development while relegating its women to the margins, positioning them as invisible reproducers of labor rather than workers in their own right. In the 1980s, the prominent Bengali feminist poet Mallika Sengupta intervened with a question that still unsettles us. ছড়া যে বানিয়েছিল, কাঁথা বুনেছিল, দ্রাবিড় যে মেয়ে এসে গম বোনা শুরু করেছিল আর্য পুরুষের ক্ষেতে, যে লালন করেছিল শিশু, সে যদি শ্রমিক নয়, শ্রম কাকে বলে? আপনি বলুন মার্কস, কে শ্রমিক, কে শ্রমিক নয়? নতুন যন্ত্রের যারা মাসমাইনের কারিগর, শুধু তারা শ্রম করে? শিল্পযুগ যাকে বস্তি উপহার দিল, সেই শ্রমিক গৃহিণী প্রতিদিন জল তোলে, ঘর মোছে, খাবার বানায়, হাড় ভাঙা খাটুনির শেষের রাত হলে ছেলেকে পিট্টি দিয়ে বসে বসে কাঁদে, সেও কি শ্রমিক নয়? আপনি বলুন মার্কস, শ্রম কাকে বলে? গৃহশ্রমে মজুরি হয় না বলে মেয়েগুলো শুধু ঘরে বসে বিপ্লবীর ভাত রেঁধে দেবে, আর কমরেড শুধু যার হাতে কাস্তে হাতুড়ি? আপনাকে মানায় না এই অবিচার। কখনো বিপ্লব হলে পৃথিবীর স্বর্গরাজ্য হবে, শ্রেণীহীন, রাষ্ট্রহীন আলো পৃথিবীর দেশে। আপনি বলুন মার্কস, মেয়েরা কি বিপ্লবের সেবাদাসী হবে? Because domestic toil earns no wage, must women only sit at home and cook for the revolutionary? If she is not a laborer, then what is labor? The etymology of labor traces back to the consciousness of sustenance, to the exertion required to build and sustain life itself. Yet, as societies evolved under the weight of socio-economic and political forces, labor ceased to remain a neutral act of survival. It became organized, divided, and unequally valued, marked deeply by caste, class, and gender. What was once a shared condition of existence transformed into a very stratified experience, where some labored to live, while others lived off that labor. Above and against this, poetry has endured as the most powerful expression of the masses. It preserves struggle and contradiction. It becomes the voice of resistance. Where policy abstracts and data reduce, poetry restores the lived reality of those who bear the brunt of these hierarchies. In Faiz Ahmed Faiz's words, "हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती हैं, ये सारा माल हमारा है, हम सारा खजाना मांगेंगे." Here, the worker is no longer a figure of endurance, but of assertion. And in holding such voices across time and language, poetry becomes not just expression, but political memory. This was The Fire in the Belly, Poetry as Political Memory, a story of labor, of migration,
of those who built the world around us, yet remain unseen within it. But their struggles did not fade. They were carried forward in songs, in poetry, in memory. And if we listen closely, they are still speaking. A huge thank you to those who lent their voices to these words. Thikana by Shukanto Bhattacharya, voiced by Orgholina Mojumdar. Kamgar Bandho by Namdev Dhasal, voiced by Rutuja Birari. Dudiyuva Kaigalu by Mohanachand Patil, voiced by Siddharur Uppin. Apni Bolun Marks by Malika Sengupta, voiced by my mother, Joyushree Sengupta. Until next time, this is The Migration Story. Check out our website www.themigrationstory.com for more content. You can subscribe to our podcast on YouTube and Spotify. The audio editing and sound design is by Akshay Ramuhalli. Stay tuned for more stories on migration. The Migration Story.